Assalamu alaikum. This is the part 2 of Taylor's method for approximate solutions of the initial value problems. इस part में I will solve a problem from exercise 5.3 of Burden and Ferry's book, and I have chosen question 2 part B. Y prime is equal to 1 plus t by 1 plus y. T varies from 1 to 2. Initial condition y is equal to 2 and t is equal to 1 with h is equal to 0.5. तो इसमें टेलर मेथड ऑफ ऑर्डर 2 एंड आई विल आल्सो सॉल्व दिस बाय टेलर मेथड ऑफ ऑर्डर 3. प्लीज इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पिछले एग्जांपल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जांपल. तो इसमें टेलर मेथड ऑफ ऑर्डर 2 तक तो कैलकुलेटर के इनपुट में आएगा, लेकिन ऑर्डर 3 में फिर कैलकुलेटर के इनपुट से बाहर आएगा. याद रहे कैलकुलेटर के जो इनपुट है उसमें 99 तक एंट्रीज आ सकती है, उससे ऊपर नहीं आ सकती. सो फॉर दैट पर्पस आई वांट टू मेक अनदर वीडियो लेक्चर व्हिच इज ऑन मैपल. तो मैपल में कोई मसला नहीं, जितने भी ऑर्डर हो या जितने भी एच हो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा. सो लेट अस स्टार्ट दिस वन. Question 2, exercise 5.3. I have called it example 4. Use Taylor method of order 2 to approximate y at 2 for the following initial value problem. इसमें y prime is equal to f of t y, this expression 1 plus t by 1 plus y. Calculate its derivative by using the multivariable chain rule. So here we can see that the derivative of 1 is 0 with respect to t, and the derivative of t is 1, and this is treated as constant. F of ty is the expression. That 1 plus t is treated as constant when we differentiate partially with respect to y, and 1 over 1 plus y, इसका derivative minus 1 over 1 plus y whole square बन जाएगा. After simplifying we get f dash of ty is equal to this. Now putting it into the Taylor methods of order 2, याद रहे कि यहाँ तक we have Taylor method of order 1 या Euler method, but if we write the value of f dash of t y or f dash of t I w I, then we have Taylor method of order 2. Set answer is equal to 2 क्योंकि यहाँ पर जो initial condition है वो 2 है. h is equal to 0.5, x is equal to ti. Let us calculate this. If answer is equal to 2, answer is 2, so I have to write answer plus 0.5 as h multiplied by 1 plus x, because ti is x, and 1 plus answer, plus h square by 2, this means 0.5 square divided by 2 whole multiplied by 1 plus the ratio of 1 plus answer square, 1 plus answer square minus 1 plus t square, that is x square, divided by 1 plus answer whole cube, 1 plus answer whole cube. And if we calculate it t is equal to 1, we have 2.356481481, which is the approximation to y at 1.5. Similarly, the other value h is 0.5, so we have to calculate it 1.5 now, and this is 2.74. This is the answer. And this question, it was asked to approximate y at 2.
Now, in the other example, the statement is different. We have to approximate at 1.5. टेलर मेथड ऑफ ऑर्डर 3 है यहाँ पे. वी हैव टू अप्रोक्सीमेट 1.5. इसकी वजह ये है क्योंकि टेलर मेथड ऑफ ऑर्डर 3 में इस एक्सप्रेशन के लिए डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है, मतलब लेंथी है, मुश्किल नहीं है, बट द कैलकुलेशंस आर लेंथी. लुक एट दिस. एफ ऑफ टी वाई है, एफ डैश ऑफ टी वाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं. हाउ टू फाइंड एफ डबल डैश ऑफ टी वाई? Partial derivative of f dash with respect to t and with respect to y, but here we have to multiply with f of ty by just simplifying and writing in the difference equation for Taylor order 3 is in the question we have to calculate only one approximation. Calculations are lengthy, and please also note that it is beyond the limit of the calculator input. कैलकुलेटर का जो इनपुट लिमिट है वो 99 तक है. अगर हम इसमें ये लिखना चाहते हैं और आगे और वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैलकुलेटर पे पॉसिबल नहीं है. उसके लिए वी नीड टू यूज कंप्यूटर, या बाय हैंड अगर करेंगे तो ज़ाहिर है उस पर बहुत टाइम लगेगा. तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन इस तरह है कि उसमें सिर्फ एक ही इटरेशन या एक ही अप्रोक्सीमेशन करनी है पहली 1.5 पे, तो उसके लिए वी नीड टू यूज जस्ट टी नॉट डब्ल्यू नॉट. तो हम इसलिए इसमें टी नॉट डब्ल्यू नॉट पुट कर लेते हैं और इसको मैनुअल तरीके से कैलकुलेटर से कर लेते हैं. तो ये मैनुअल तरीके का मतलब ये है कि ये जितना हो सकता है उतना कैलकुलेट कर ले, फिर ये बाकी कैलकुलेट कर ले. तो आई थिंक ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं. इसी तरह एग्जैक्ट सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन. हाउ टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन? दिस इज अ वेरी सिंपल सेपरेबल इक्वेशन. इफ वी राइट dy by dt, सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 और t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा. Or after applying the initial condition, we get the value of c as 5/2. So this is the general, this is the particular solution. याद रहे कि इसमें अगर हम 1.5 पुट करेंगे तो इसकी दो वैल्यूज आती है बिकॉज वाई स्क्वायर भी इसमें है, लेकिन वो जो दूसरी वैल्यू है वो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, एंड वी विल कंसिडर दिस वन एज आवर सोल्यूशन.